Salutation to all of the world. संसार का सभी को अभिवादन. अभिवादन छ सबैलाई. Knowledge alone can remove the ignorance. Knowledge alone can remove the ignorance. ज्ञानले अज्ञानलाई विनष्ट गरिदिन्छ. ज्ञान मात्रले, ज्ञान एक्लैले अज्ञानलाई सधैँका लागि नष्ट गरिदिन्छ. केवल एक ही ज्ञान से अज्ञान को विनष्ट करता है. ज्ञान अकेले ही अज्ञान को विनष्ट कर देता है. इतना ताकत है ज्ञान में. ज्ञान में ज्यादै ताकत छ. ज्ञान में ज्यादै ताकत छ जसले अज्ञानलाई क्षण भरमा विनष्ट गर्न सक्छ. Knowledge has much power to remove for always the ignorance. Only through knowledge. Knowledge means Saraswati education. Knowledge means Saraswati education. सरस्वती विद्या ही ज्ञान है. सरस्वती विद्या ही ज्ञान है. ज्ञान भनेको सरस्वती विद्या हो. ज्ञान भनेको सरस्वती विद्या हो. ज्ञान इज शिव. शिव इज ज्ञान. शिव इज कॉन्शियसनेस. Shiva is a consciousness. Consciousness is Shiva. शिव ही ज्ञान है. ज्ञान ही शिव है. ज्ञान है चैतन्य. चैतन्य है शिव. शिव है ज्ञान. ज्ञान है चैतन्य. शिव भनेको चैतन्य हो. शिव भगवान भनेको चैतन्य हो. चैतन्य मात्रलाई लिएरै शिव भनिएको. किनभने चैतन्यको जन्म हुँदैन, यसैले मृत्यु हुँदैन, सदाकालीन हो. चैतन्य मात्र शिव भएकोले शिवको जन्म हुँदैन, किनकि चैतन्यको जन्म हुँदैन. त्यस कारणले चैतन्य मर्दैन. यस कारणले चैतन्य शिव सधैँको. यही चैतन्य शिव ज्ञानले सारा अज्ञानलाई विनष्ट गर्न सक्छ. Only Shiva. The Shiva means consciousness. The consciousness, no birth of consciousness, so no birth of Shiva, so no death of Shiva. No death of Shiva, because Shiva has not born. Shiva has not born, so Shiva never dies. Because Shiva is Chaitanya, consciousness, that is knowledge.
And real, the reality of humanity is a knowledge, consciousness. So, by nature, the actual human is Shiva, Shiva, God, Goddess. हर हालत में शिव शिवा है हम लोगों का स्वरूप। संसार का सभी का स्वरूप है शिव शिवा। That is ज्ञान, consciousness never dies because never born, so never dies, always being. That we are, actually we are God, Goddess, Shiva, Shiva. Due to ignorance, अज्ञान का कारण से, अज्ञानले गर्दा नै, due to ignorance, we are living, being as a duplicate, not in originality, because our originality is God, Goddess. The world is duplicate, not originality. Originality is God. So, the concern of world, the concern of human beings with God, only with God, due to consciousness. So, ignorance we should remove, because until ignorance up to world, until ignorance up to duplicate human beings, the actual nature of human beings is God. So we, all of the world, God, Goddess, it's true. It's Vedic philosophy, top philosophy of the world, top supreme philosophy of the world, that is Vedic. So this we are saying, listening from salvation point of view, मुक्ति को दृष्टिकोणबाट, मुक्ति का दृष्टिकोण से ये हम लोग अभी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। We are expressing from the point of salvation. The meaning of salvation in Nepali और हिंदी मुक्ति और मोक्ष, निर्माण, that is moksha, mukti, salvation. So, actually, we all are God, Goddess, not mortal body, not a mortal world. मरणशील शरीर हम लोग नहीं है, जो मरता है शरीर वो हम लोग नहीं है, जो नाशवान संसार है वो हम लोग नहीं है, जो नाशवान संसार है वो हम लोग नहीं है। हम लोग अविनाशी है, हम लोग अविनाशी है। अविनाशी का मतलब अमर है,
अमर का मतलब इमोर्टल है, नो मोर्टल. So our concern with is immortal. It's sure. Shivoham. Veda says for us to say Shivoham. Shivahuma. I am Shiva. Shiva. I am. I am Shiva. Aham Brahmasmi. In Sanskrit, Aham Brahmasmi. मैं ब्रह्मा हूं. नेपाली मैं ब्रह्मा हूं. हम ब्रह्म है. ब्रह्म ही हम लोग हैं. ब्रह्मा. ब्रह्म मीन्स शिवा. ब्रह्म मीन्स शिवा. That is actually knowledge. So knowledge can remove. Knowledge only. Knowledge alone can remove the ignorance. Ignorance is the mother of the world. So we should remove ignorance and should live as a God goddess, as a salvation. We should live. It is true. There is no doubt. या कोई शंका नहीं है. सही बात है. सच बात है. सच बात को लेना पड़े. So we are immortal. Soul is immortal. आज के दिन में ये लेना है. आज के दिन अर्थात आज को दिन हो, समय हो, विक्रम संवत 2081 साल, नया साल बैसाख, आज 20 गते बिहिबार. English date is 2024. The month of May 2nd, and day is Thursday. And from the Hinduism religious point of view, from Tithi point of view, that is Vaishakh, Krishna Paksha Navami. Vaishakh Krishna Paksha Navami. बृहस्पतिवार, गुरुवार, light everywhere. The light, actual light is knowledge. Now, this program we are listening, we are telling by Balaram Ji, the title Guru Bhakta Ratna Advait Pardip Saraswati, the president of Akhanda Sukha Kendra, immortal pleasure, means Ananda, pleasure Ananda, immortal pleasure center from Nepal country, city Bhairava, and the radio, the media through Rupandai FM from Bhairava, Gotol Bhakti FM, and Palpatansan Srinagar FM radio, Radio Parasi, direct broadcasting from these radios all over the world, online system, and from YouTube, from Twitter, we can know, we can see if we are interested. The time only 15 minutes, about 15 minutes. Actually, we are God and Goddess. This is the version of Vedic. The Vedic is the
supreme philosophy of the world, the supreme philosophy of the world, that is Vedic, says for all of the world that we are God and Goddess. Actually, we are God and Goddess. Now the time is ending. समाप्त होना होना जा रहा है समय. अहिले यति नै गरौँ. हरि ओम तत्सत. ओम शान्ति शान्ति शान्ति.